Welcome, guys. So this is our new real life networking skills batch. Okay. So guys, जो इस कोर्स का पर्पस क्या है? अगेन आपकी क्या है? जॉब लगवाना, इवन आप इंडिया में हो या अब्रॉड में हो. So we will provide you like all the networking skills. Okay, that is totally a real perspective knowledge. Okay. तो इस कोर्स में गई लाइक हम राउटिंग, स्विचिंग, वाईफाई, नेक्सस और फायरवॉल, ये सारे टॉपिक है हम कवर करेंगे. अगेन all those topic guys like I will teach you like a real. And you see guys like ना सिर्फ हम बेसिक के ऊपर फोकस करेंगे, again we will also focus on the troubleshooting and understanding the concept. Okay, so I will show you guys like once you have the knowledge of like all these technology, तो कंपनीज में कैसी रिक्वायरमेंट आती है या कैसी टिकट आती हैं, और डे टू डे जो नेटवर्क इंजीनियर है उसका काम क्या होता है. ओके, तो फर्स्ट थिंग है लाइक जो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर रहा है, सो आई एम अज्यूमिंग यू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग लाइक सीसीएनए, लाइक आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, या सिंपल राउटर और स्विचेस क्या काम कैसे करते हैं. ओके, सो दोज गाइस जिनके पास सीसीएनए की नॉलेज नहीं है, मेक श्योर पहले वो आप सीसीएनए स्टडी करो, देन ज्वाइन दिस कोर्स. The first thing like as I told you, we start from the switching. So switching में guys like हम like first we'll start what is switching. So layer to communication, यानी कि अगर आपके पास दो मशीन है सेम सबनेट में, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और इन केस अगर आपको पाथ को मॉडिफाई करना है तो आप पाथ को कैसे मॉडिफाई करोगे. Then these are the key topic guys like ether channel, multi-touch ether channel. Okay, we definitely will see on enterprise switches as well as nexus switches. Okay, then these are the protocol like HSRP, VRRP, GLVP. So these days guys like हम ये protocol क्या LAN में use नहीं करते, but still guys I will show you the company diagram. Even guys ये protocol guys आप क्या router के ऊपर भी क्या use कर सकते हो. तो ये depend करता है आप Cisco use कर रहे हो या other vendor use कर रहे हो, but you will see guys see this technology in the real network. And mainly guys like अभी जो मैं फोकस करूंगा like इस बैच में जो नया ऐड कर रहा हूँ, you see guys like Cisco में पहले जो मेरे enterprise switches थे, which is like 2900, 3700 या 3800. Okay, or in the core we have like 4500, 6500 guys. Now these switches are gone now. Okay, with Cisco ने switches क्या एंड ऑफ लाइफ और एंड ऑफ सपोर्ट क्या अनाउंस कर दिए हैं. तो हर कंपनी में गाइस क्या स्विचेस क्या रिप्लेस हो रहे हैं. सो दे आर रिप्लेसिंग विद द सिस्को न्यू सीरीज व्हिच आर 9K. सो डोंट कंफ्यूज विद गाइस दिस सीजन बिकॉज़ नेक्सस आल्सो हैव द सेम सीरीज ऑफ स्विचेस. ओके, बट ये गाइस मेरे क्या कैटलिस्ट यानी कि एंटरप्राइज स्विचेस हैं. इवन गाइस लाइक आई जस्ट मूव टू कनाडा. ओके, आई गॉट द जॉब एंड उस कंपनी में गाइस मेरे को क्या है सिंपली स्विचेस रिप्लेस करने हैं. दे हैव लाइक अराउंड 250 switches. Okay, in 2 location, or earlier they are using this in 3800 in a access layer or 6500 on a core layer. Okay, like मेरा उस जॉब में मेरा जो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब. ओके, तो मेरा जो काम क्या है स्विचेस को क्या रिप्लेस करना है, तो वो गाइस मैं रिप्लेस कर रहा हूँ. तो लाइक जो हम 9300 है वो हम एज ए एक्सेस लेयर यूज करेंगे, और जो 9500 है वो हम यूज करेंगे एज अ कोर. ओके, सो लाइक in the interview guys they ask me some question around regarding this model. So definitely guys like we will in this new batch, okay, we will see what are the difference on this new model. Okay, but the rest of technology guys अगर आप बात करते हो HSRP, VLAN configure करना है, SVI आपको configure करना है, that are the same. Okay, तो like मेनली इस बैच के अंदर मैं इन मॉडल के बारे में आपको क्या आई विल शो यू इसको अपग्रेड कैसे करते हैं, देन व्हाट आर द डिफरेंस एज कंपेयर टू द प्रीवियस मॉडल. ओके, क्योंकि आजकल जो स्विचेस आपके लैन में यूज होंगे वो मेनली आपको यही मिलेंगे. इवन लाइक फ्रॉम लास्ट 2 or 3 years गए लाइक कंपनीज क्या स्विचेस क्या ऑलरेडी क्या यूज कर रही हैं
So I have like, I remember like I upgraded these switches in 2019 also. So they have a like different way to जब आप Cisco switch को क्या upgrade करते हैं आप. So we will discuss about those thing. Okay. So another guy, like you will also get my CCNP video, switching video. So mainly guys, like as I told you, ये जो course के अंदर हम mainly जो key topic हैं, we gonna discuss these things. Okay. So I'm not going to discuss like STP protocol क्या होता है और वो हम क्यों use करते हैं. But still guys, like I will cover the basic of STP, like port fast हम क्यों use करते हैं. Then BPU guard, BPU filter, वो मैं सारे cover करूँगा. But I'm not going to start with the basic of STP. Okay. तो guys अगर आपको let's say आपको STP basics से पढ़ना है, then you will start my CCNP video. Okay. So this is a switching thing, guys. Like then we will see the routing. Okay. So in the routing, again, guys, like we will main focus on two protocol, which is OSPF and BGP. And again, guys, like I will start from the first basic thing, routing कैसे काम करती है, और mainly difference between static routing और dynamic routing में क्या difference है. Then we will see the ISP failover scenario. Obviously, guys, आपको ये scenario यानी कि अगर आपके पास दो ISP हैं हर कंपनी के अंदर, और एक ISP अगर आपका डाउन हो गया, तो मेक श्योर दूसरे ISP पे क्या ट्रैफिक है ऑटोमेटिकली क्या मूव होना चाहिए. So these are the like very basic requirement. Okay, so not only we see on a router, so we will see on the firewall also. But again the thing is like guys, आपका क्या concept clear होना चाहिए, ISP failover कैसे achieve होता है. तो आपको क्या routing configure करनी पड़ेगी on the devices, चाहे वो आप routing router पे configure कर रहे हो, or even you are configuring the routing on the firewall. As I told you guys, like we will see the real thing scenario, OSPF troubleshooting scenario, BGP requirement. Then guys, like I have also add in this new batch, okay, which is WAN technology. So these days, guys, like this is very popular, okay, Cisco SD-WAN. So unfortunately, guys, like I don't have now the way to show you the practical on the EWAN G. But let me see, guys, like if I get a chance, like one of my friend, he's working on this technology. So we will take the remote of the my friend machine, and I will show you the like basically SD-WAN हम क्यों use करते हैं, and और day to day guys हमारा काम क्या है. So I'm not showing you like as I told you the practical. अगर किसी कंपनी के अंदर ये पहले से डिप्लॉय हो रखा है, so मैं अब वो आपको क्या explain करूँगा. And I have a PPT for this SD-WAN, okay. But the point is, after those knowledge, okay, तो आप at least क्या SD-WAN के ऊपर क्या आप interview क्या face कर सकते हो. And before we cover the SD-WAN, we will see the old technology, like दो ऑफिस आपके क्या है कैसे कनेक्ट होते थे. ओके, तो ऑब्वियसली गाइस जब भी आप किसी भी नई टेक्नोलॉजी को पढ़ते हो, तो मेक श्योर पहले आपको पता होना चाहिए प्रीवियसली कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी और उसमें क्या डिसएडवांटेज थी. और वंस लाइक वी आर मूविंग टू SD-WAN, ओके, हमारे पास क्या क्या एडवांटेज आ रही है. देन अगेन गाइस लाइक वी विल सी द इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड ट्रबल शूटिंग. तो हर एक चीज का जो हम कवर करेंगे, मैं आपको एग्जांपल सिनेरियो बताऊंगा, मतलब कैसे आपके पास क्या, जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे तो आपको पता होना चाहिए लाइक मैंने BGP में ये इशू फेस करा और दिस इज हाउ वी ट्रबल शूट. तो हर एक चीज गई लाइक हम क्या सिनेरियो बेस पढ़ेंगे. और आई विल ऑल्सो शेयर यू माई प्रीवियस ट्रबल शूटिंग एग्जाम्पल. ओके, देन गाइज वी विल सी द डाटा सेंटर. डाटा सेंटर में गाइज हम क्या बेसिक कवर करेंगे नेक्सस के अंदर, विच आर like these model, okay, 7K, 5K and 2K. तो again BPC क्या होता है, fabric path, और why Cisco introduced this nexus switches, okay. वे like ये सारा हम क्या बेसिक nexus हम कवर करेंगे. So again idea क्या है guys, आप अपने CV पे क्या है इसको mention करोगे, so that guys like
एटलीस्ट क्या आपको लाइक जो बेसिक क्वेश्चन है पीपीसी फैब्रिक पाथ जहाँ नेक्सस में डाटा सेंटर में गाइस हम जो डिजाइन यूज करते हैं विच इज कोर स्पाइन लीफ, इसका पर्पस क्या है? ओके, देन गाइस कमिंग टू द वाईफाई, वाईफाई के अंदर भी गाइस मैं क्लास लगाऊंगा आपकी लाइक फर्स्ट जो कंपनीज में हम लाइट वेट एपी यूज करते हैं और कंट्रोलर तो कैसे आपके क्या फिजिकल डायग्राम कैसे होता है, आपके ईपी कहाँ पे लगे होते हैं और आपका कंट्रोलर कहाँ पे लगा होता है, देन द बेसिक थिंग। ओके, तो गाइस ये सारा गाइस मैं आपको शो करूंगा ऑन द रियल नेटवर्क। देन गाइस वी विल कवर द फायरवॉल। तो फायरवॉल में गाइस हम कवर करेंगे लाइक पोलोल्टो और फोर्टिगेट। ये मैं आपको क्लासेस क्या है लाइव पढ़ाऊंगा और फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, वी सी गई लाइक फायरवॉल हम क्यों यूज करते हैं और कंपनी में हम फायरवॉल क्यों यूज करते हैं। तो बेसिक जो फायरवॉल का काम क्या है, स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग प्रोवाइड करना। सो वी सी गई दीज टू फायरवॉल आई विल कवर द लाइव। हाउएवर जो मेरा थर्ड फायरवॉल है गाइस इसको एएससी, आई विल प्रोवाइड यू माय रिकॉर्डेड क्लासेस। ओके ओके, तो अगेन लाइक आफ्टर दिस कोर्स आपके पास क्या है, राउटिंग स्विचिंग की भी नॉलेज होगी, आपके पास फायरवॉल की नॉलेज होगी और आपके पास क्या वाईफाई की नॉलेज होगी और आपके पास क्या लिटिल बिट अबाउट डाटा सेंटर। ओके, सो एट द एंड दैट मीन्स क्या है, ये सारे स्किल चाहिए आपको नेटवर्किंग फील्ड में जॉब लेने के लिए, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप अब्रॉड में हो। So yeah, that is it, guys. Like, so this is basically the course agenda. So like, if you have any question, please let me know. मैं आपको unmute कर रहा हूँ. And after that, guys, we will have a class. Okay, so we'll start the switching class. So अभी जो guys जो course की जो duration है, I will take the classes only in weekend. Okay. So हर सैटरडे में गाइज क्या है 2 घंटे की क्लास होगी लाइक 1 hour, देन मे बी 10 और 15 मिनट ब्रेक, देन अगेन 1 hour। तो द क्लास टाइमिंग गाइज क्या होगी फ्रॉम इंडिया के हिसाब से 9 PM टू 11 PM। और ये ड्यूरेशन है गाइज टू बी ऑनेस्ट ओके, लाइक पहले ही मैं क्लासेस वीकडेज में लेता था, बट अभी गाइज बिकॉज ऑफ माई जॉब ओके, तो जो मेरी जॉब है वो क्या इज फार फ्रॉम माई हाउस। ओके, तो मैं वीकडेज में क्लासेस नहीं ले सकता। I will take the classes only on weekend. Okay. Any question regarding the fees? The fees guys इसकी क्या है, अभी मैंने थोड़ी चेंज कर दिया। If you paying one way, okay, तो आप the fees क्या है 20K है। However guys अगर आप fees partition में दे रहे हो, then the fees will be 25K. Okay. The reason guys like I have also added the new technology like SD-WAN or this, तो फीस मैंने गाइस क्या इंक्रीज कर दिया, बट अगेन अगर आप सीधी फीस दे रहे हो देन द फीस विल बी 20K सेम जो पहले फीस थी इसकी। सो यू विल आल्सो गाइस लाइक वंस यू पे द फीस, आपको जो मेरे पिछले बैचेस की वीडियो है वो भी आपको क्या प्रोवाइड की जाएंगी। इसी के लिए इस बैच के अंदर मैं ना सिर्फ मैं बिल्कुल जो कंपनी में जो मैंने टिकट सोल्व करी हुई है वो पहले से मैंने क्या रिकॉर्ड कर रखी है। ऑब्वियसली दोज वीडियो यू विल नॉट गेट ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके, बट जो अगर जिसने फुल फीस पे कर देगी तो वो मैं आपको क्या वीडियो क्या प्रोवाइड कर दूंगा। उसका बेनिफिट क्या होगा गाइज, तो लाइक अगर आप न्यू क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो पहले से अगर आपने वो सारा टॉपिक क्या पढ़ रखे हैं देन यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो नेटवर्किंग में गाइज क्या जितना आप रिपीट करोगे उतना क्या आप ज्यादा सीखोगे। ओके, सो मेक श्योर गाइज लाइक यू आर लर्निंग, जो भी आप नई चीज सीख रहे हो उसको क्या आपको प्रैक्टिस करनी है और अपनी जो नॉलेज है वो क्या शेयर करनी है। ओके, सो एनी क्वेश्चन गाइज यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग दिस कोर्स। Okay, so if you don't have a question guys, can you give the basic of radius and track as? Yes, definitely, yeah. So these things are like you will see in my CCNP switching video,
bit practical, okay, why we use radius or TACs. But yeah, we will see like this thing, okay, like radius or TACs when we cover the VPN part also, a remote access VPN. And yeah, we will see the difference. But guys, those who have my CCNP video, switching video, उसके अंदर मैंने ये कवर कर रखा है रेडियस एंड टैकेस. जो आपके प्रोग्रामर्स थे जिनकी फीस कंप्लीट हो गई है उनके your voice is low, Arjun. कैन यू हियर मी? Yeah, I can hear you. एक्चुअली मतलब ये पूछा था जिनकी फीस कंप्लीट हो गई है जो पहले वाली स्टूडेंट है. Can you like type your question on the chat? Other guys, can I ask something? Yeah, sure. Yeah, actually, I just want to ask. Currently, I'm working in ISP, and they are using ISIS protocol of the production. So, will you going to add this topic as well, because this will going to help you a lot? You see, like this course is mainly designed for the enterprise network. You see, this is the enterprise diagram we have. So, okay, like ISP, they have a different network. Okay, you see, like in India or maybe anywhere. Okay. So let's see, like अगर आप इंडिया की बात करते हो तो in India we have only 3 ISP company, okay, like Airtel or Tata, maybe Reliance, some of the like other company guys. Rest or all other company, they are basically we called enterprise. Okay. So obviously guys, like ये जो अभी जो course है हमारा, this is for enterprise networking, not for the ISP network. So I'm not covering like all the ISP technology. However, even in the enterprise, you will get my BGP and MPLS video, but not like ISIS protocol or MPLS layer 2 VPN, MPLS layer 3 VPN. However, like I have covered this MPLS layer 3 VPN in this video, in this my video, okay? But Sidowire, all the other thing, okay, जो कि ISP के अंदर use होती हैं, we are not going to cover those technology, guys. So this you see, like guys, like ISP, they have very few company, okay, few option to get the job in the networking, but ऐसा नहीं, obviously आपकी job लग सकती है ISP के अंदर भी वैसे तो, but chances are few as compared to the other. With the rest of the company, okay, they are all our enterprise network. Thank you so much. One more thing I just want to ask. After completing this course, what is the approach to get placed in the enterprise network companies? You see, like show like so everything, okay, like this is the mainly you will see the diagram in enterprise. So every practical, okay, every practical I will show you on this lab, okay. So that guy, like you will see the thing. अगर आपको VSS use करना है तो ये technology हम क्यों use करते हैं and where we are placing it, okay. Or once we're placing the VSS on our LAN or on our course, which is what are the advantages we are getting, okay. So everything like I will show you on this enterprise network, okay. So even like you see, like today, like we're gonna start our first topic. So which is switching, okay. In the switching, like I have this design. So I'm following the design, which is like our core and access. Some company they use core, distribution, access. So we will see the difference, okay. Why we, if let's say if we're designing the network, why we follow 3-layer architecture, or some company they use only these 2 layer, okay, core or access. So everything like as I told you, I will explain you like a real, okay. So the point is, even though जो ISP में काम कर रहे हैं, and if you want to move to the enterprise, you can, okay. Yeah, okay, thank you so much. Thank you for this. Any other question, guys? Okay, so if you don't have a question, let's continue the class, guys, okay. So the first thing, like we start with the switching. So in the first class, guys, like we will see the communication, okay, how the layer 2
let's say if you have a two machine, okay, point A or point B. So in this topology, we have a system A or system B, and I haven't like done any configuration on the switches, guys. We see कि like जो point A or point B है, ये by default कौन सा path follow करते हैं? You see like अगर ये system इस system से communicate करता है, so we have multiple paths. Okay, so we have a, let's say traffic is hit to this access switch 1, then we have a one path is, so this is my first path, and the second path we have a जो traffic आपका क्या access switch 1 के पास जाएगा, then maybe directly क्या port 2 के पास, or then access switch 2 के पास. Okay, and the third way like we have, let's say traffic आपका क्या access switch 1 की तरफ जा रहा है, then it going to the core 1, then going to the access switch 2 and to this host. Okay, so we see by default what I have done. Okay, I just connect the switches. Okay, and we have a two machine, and I have configured only the IP addresses. Okay, so we see like by default ये कौन सा path follow कर रहे हैं, and in case if we want to modify the traffic, okay, which is known as in technical term traffic engineering. So this is the layer 2 traffic engineering. Later on, like when we talk about the routing, तो अगर आपको इस path को modify करना है, तो आपको वो पता होना चाहिए layer 2 में हम कैसे modify करेंगे. और when we talk about routing, this is known as layer 3 traffic engineering. तो routing में हम guys क्या कैसे path को क्या modify कर सकते हैं. Again वो depend करता है which routing protocol you are using. And then like we see first thing why we use this design. Okay, and then we have a key topic which is this new switches. Okay, so 9200, 9300, so these are the Cisco new switches. So we will see tomorrow about these switches. Okay, so I will show you the first thing in the difference क्या है. Tomorrow like we'll also talk about the upgrade process. Okay, and the rest of technology गई like अगर आपको HSRP configure करना है, आपको STP configure करना है, maybe you want to configure the ether channel, they are the same. Because the other switches गई like if you see 38, 4500, they are now obsolete. So definitely guys like अगर आपके पास जो नई मॉडल है इसकी knowledge है, तो you can put this thing on your CV. And definitely guys जैसे कई कंपनियों में क्या होते हैं, they have a separation. Okay, they have a separation, they have a network team which is basically managing only the routing and switching and the Wi-Fi part, and you have a network security team which is managing the firewall and your VPN, and maybe you have a proxy. Okay, so the point is like if you have a good knowledge of routing switching, still you can crack the interview. So here guys like I'm only working on switching and SD-WAN. Okay, so they haven't asked me any question about the firewall, but some company they require one engineer who can manage routing, switching, Wi-Fi as well as the firewall. So वो depend करता है how big is your network. Okay, let's say if you have 100 site, in the 100 site you have a lot of switches, you have a lot of router, and you have maybe more than 200 firewall. उस case में guys वो क्या करते हैं, separate कर देते हैं team. Okay, so let's start the switching part. Okay, then tomorrow we will mainly focus on the Cisco 9K model. Okay, so here guys like if you see point A to point B, we have connectivity. Okay, because by default guys जब आप ये switches ऐसे connect करते हो, they all are sharing the same segment which is VLAN 1. Okay, and if you see from system 1, let's say this is my window machine, and the other host guys I have a router. Okay, the router guys just क्या as a end device का काम कर रहा है, और मैंने उसको क्या simply IP address दे रखा है. So this machine guys, let me reconnect this machine. Okay, so this machine guys like if you ping this IP,
So by default, guys, we have a connectivity. Okay. So इस case में, if you want to see जो आपकी communication कैसे हो रही है, the first thing is like we need the MAC address of this PC. Okay. Same segment में guys क्या है, जब आप communicate करते हो, so उस case में guys क्या है, हमें क्या है, physical MAC address. Okay. जो switches हैं, they are forwarding the traffic a baseband MAC address. If you see guys, like this is a PC we are communicating, which is 1.2, और उसका जो MAC address है, which is let's say 9C00. Okay, so इस case में जो आपको MAC address तभी शो होगा ARP टेबल में, in case guys अगर आप communicate कर रहे हो same segment machine के साथ. But in case guys अगर आपकी जो machine है इसे different network से communicate करती है, जैसे Google से, तो उस केस में अगर you see आप रिक्वेस्ट किसको भेजते हो, अपने गेटवे आईपी को. तो जो गेटवे आईपी है वो कब पिक्चर में आता है, इन केस इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद द डिफरेंट नेटवर्क. ओके, सो इफ यू सी लाइक ऑन माय सिस्टम आई हैव इंटरनेट एक्सेस. ओके, सो आई हैव इंटरनेट एक्सेस. सो इफ यू सी दिस पीसी कैन कम्युनिकेट टू द इंटरनेट 8.8.8. But if you see this machine ARP table, okay, ARP-A, we don't have an entry for 8.8.8. So these are the basic things, guys. And definitely, guys, your basic must be strong in case guys अगर आपको क्या trouble shooting में perfect होना. So इस case में you see अगर मैं इस IP से communicate कर रहा हूँ 1.2, इसका MAC address क्या है? This is a MAC address. The first traffic guys आपका कहाँ आएगा? As per the diagram, इस switch के पास आएगा, which is our access switch 1. Then we will see the MAC address table of this switch. This switch basically decide इस MAC के लिए जो traffic इस तरफ send कर रहा है या इस तरफ traffic send कर रहा है. So on the switches guys, we will see the command. Basically जो switches है guys वो क्या है? MAC address table के बिहार पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं और हमें डिफाइन करेंगे जो मेरा लीविंग इंटरफेस क्या है. ओके, ऑन द राउटर गाइस वी विल सी द आईपी एड्रेस और वी विल सी द लीविंग इंटरफेस. क्योंकि जो राउटर और स्विच का गाइस काम क्या है, ट्रैफिक को क्या है, फॉरवर्ड करना. तो यू सी लाइक जैसे आप देखो स्विचेस पे गाइस एक इंटरफेस पे ट्रैफिक आता है और दूसरे इंटरफेस से क्या लीव हो जाता है. सिमिलरली लाइक राउटर पे भी क्या है, आपका एक इंटरफेस पे ट्रैफिक आएगा और दूसरे इंटरफेस से क्या लीव कर जाए. बट हाउ वी फिगर आउट, ओके, सो ऑन द स्विचेस गाइस वी विल सी द कमांड. So this is the MAC address of a destination IP, okay, 9CC00. So if you see the MAC address table of access switch 1, which is this is access switch, okay, and if we see show MAC address table, this is the MAC address, guys, 9C00. My leaving interface is gigabit 0Y1. So इस केस में guys, you will see as per your diagram जो gigabit 0Y1 है वो किसकी तरफ जा रहा है, core 1 की तरफ जा रहा है. So in the real world guys, like we use this command like show MAC address. So जिस address के लिए guys हमें क्या है check करना है, मेरा leaving interface क्या है. So this is a MAC address guys like we are looking for, okay, and you can see the leaving interface is gigabit 0Y1. On the router guys, I will use this command show IP route. So router forwarding the traffic a baseband destination IP. तो ये अगर आपका destination IP है तो आपको you will see the leaving interface. Okay. On the switches we will use this command. तो switches में guys क्या होगा, destination MAC होगा और router पे guys क्या होगा, destination IP address होगा. At the end basically guys you will see the your leaving interface. So इस केस में guys जब ट्रैफिक आपका एक्सेस स्विच 1 की तरफ जाएगा and the access switch showing my leaving interface is this one, which is gigabit 0Y1, which is going to the core 1. Then on the core
we will run the same command, then the core will also tell us the leaving interface. Okay, तो ये आपको गाइस क्या है, ऐसे होप बाय होप आपको क्या है ट्रेस करते जाना है जब तक आपको ये नहीं मिल जाता ये जो एंड मशीन है ये किस एक्सेस स्विच पे कनेक्टेड है. So you see guys, like the same way I'm following. Okay, so show MAC address table. So this is the command we will run on the core switch. Okay, and the core will also tell us the leaving interface. So if you see, okay, I believe, so this is our core one. Let me initiate the traffic again. So by default, guys, like if you see the switches have aging time, which is by default 5 minutes. Okay, I don't know why they flushed the table. Okay, but if you see now we can see my leaving interface gigabit 0 via 0, which is this, which is connected to the access switch 2. Okay, so this is a gigabit 0 via 0. So if you see by default जो आपका जो पाथ है वो फॉलो हो रहा है. सो जो ट्रैफिक पहले एक्सेस स्विच 1 की तरफ जाएगा. सो एक्सेस स्विच 1 जो लीविंग इंटरफेस है which is gigabit 0 via 1, then core has leaving interface gigabit 0 via 0 which is access switch 2. और access switch 2 के पास गए सिंपली आप चेक करोगे the same command. Okay, the show MAC address table on the access switch, you will run the same command and you will see this is my leaving interface gigabit 0 via 0. So you see, like by default we are following the same path. In switching, guys, switching always symmetric. Okay, but routing can be asymmetric. So symmetric means, guys, जो आपका outgoing path है, आपको जो reverse path है वो भी क्या same ही होगा. So this is known as symmetric path. means जो आपका outgoing path है, incoming path भी क्या same ही होगा. But routing can be asymmetric. So let's say, guys, like if we have a, let's say, router, we have a two link, we have a point A, we have a point B. So if these hosts communicate with each other, the outgoing traffic, let's say, going via this direction, but my reply traffic coming via this way, okay, on the link 2. In routing, this can be possible. Okay, you will see some of your application break because of asymmetric routing, but switching, guys, as I told you, it is always symmetric. Okay, so you see, guys, like this is basically by default we are following this path. Okay, so this is, guys, like how we trace. Okay, so hope by hope, guys, आपको क्या MAC address table check करना है और destination MAC जिसके लिए आप trace कर रहे हो. And you see, like, guys, normally you will configure this port as a access port, switch port mode access. So this means, guys, आपका जो end device है जिसको आप trace कर रहे हो वो इस switch के इस port पे connected है. और switch to switch, guys, we have a always trunk port. And you can also use a CDP. So let's say, guys, अगर आपके पास ये topology का view नहीं है, let's say you don't have a view of this topology, because in the real world you are basically logging on your switches, okay, and you don't have a view to your topology, and you are tracing the path from this system to this system. Okay, let's say you have a guy, like in the ticket you got one issue and they have mentioned we have a source IP is this and the destination IP is this. In the real world, like I will show you आपको कैसे पता चलेगा जो even the source है वो इस access switch पे connected है, but let's say, guys, like assume आपको वो पहले से पता है, but I will show you, guys, like later on when we configure the SBI interface on the core. Okay, so in the real world, guys, like हम हर एक VLAN के लिए क्या SBI configure करते हैं on the core, but right now I don't have a configuration
So that's why guys, like I'm assuming at least आपको इतना पता है जो सोर्स है वो इस स्विच पे है. Then simply guys आप पहले क्या आप डायग्राम बनाना शुरू करोगे, like access switch 1, here we have a source IP which is 192.168.1.1. Then जिस IP से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, make sure आपके पास क्या है उसका IP एड्रेस और उसका MAC एड्रेस which is 9C000. वो सिंपली गाइस आप जो अगर आपके पास इस सिस्टम से अगर आप उसका R टेबल चेक करोगे, you will get the MAC address. Okay. So on this access switch, you will run the command show MAC address. Like इस डेस्टिनेशन के लिए मैं ट्रैफिक किस तरफ फॉरवर्ड कर रहा हूँ वो आपको बताएगा गाइस. Like okay, this traffic is going via gigabit 0 via 1. Then you will run the show CTP neighbor command. Like gigabit 0 via 1 पे आपका कौन सा uplink device connected है. Normally guys we call this link which is going towards to my core, this is known as in the real world uplink. Okay. So then you will see the gigabit 0 via 1 and this is connected to my core 1. Then on the core 1 you will log into this device, you will run the same command show MAC address and address and destination MAC address. And the core will show you for this MAC address, I'm sending the traffic towards to gigabit 0 via 0. Then you will see the command on the core, show CTP neighbor. This interface connected to which device? So this is connected to our access switch 2. Okay. Then you will, on this access switch, you will again run the command and you will see this traffic is going gigabit via 0 and this port has switch port mode access configuration. Then you will figure out your 1.2 app, this is connected on this switch and this port. So then guys, like this is the way you can make the diagram. Okay. So this guys, like you must require if you're doing the layer 2 troubleshooting. तो ये आपको क्या ट्रेस करना आना चाहिए. We will see the tracing on the layer 3 also, but right now guys, like we are talking about the layer 2 trace path. You simply guys, like the same way, if you see we follow okay the show, like जब हम पहले access switch पे जब हमने ये command check करी थी, then we figure out this is my leaving interface. Okay. Then simply guys, you will run the command show CTP neighbor. Gigabit 0 via 1 is going to the switch which has named this switch. And right now guys, like I don't have given the name, but in the real world guys, like you will see like जो आपने host name दे रखा होगा, मुझे like अगर आप जो ये switch है आपका इसने आपने host name दे रखा होगा, let's say host name core 1. Okay, and this switch has name host name access switch 2. Okay, you see guys, like on the core 1 when you again run the show CTP neighbor, you will see this will guys update after this is my old entry, the CTP byte port hold down timer which is 180 seconds. Let me see, let's say clear CTP table. You will see the latest show CTP neighbor. Now you see the core 1. Still guys, I believe like this entry will be removed after 180 seconds. But yeah, now you know my leaving interface device is connected to the core 1. Then you log in on this device and hope by hope you will trace the path until you don't get the destination MAC where it is connected. Okay. How many months it will take to complete the course? So as I told you like earlier guys, like this course will be completed around 3 months in weekdays, but weekend में guys again जो classes हैं वो क्या है 2 hour की होंगी instead of 1 hour. Okay, so you can see guys like every week we are studying 4 hours. Okay, so you can I don't give you the exact number of months, okay, but it will take more than 3 months definitely. But again, it depends on my job.
So right now, guys, like I have a contract job, okay, which is only for 3 months. When it is completed, okay, and if I get, let's say, the job nearby my house or remote job, then I will also take the class in weekdays also. Okay, any question, guys, up to this point that we have covered? हेलो Yes. सर, मैं सूरज बोल रहा हूँ। ये एक रिसेंटली मुझे एक प्रॉब्लम मिला था। यहाँ पे शो मैक एड्रेस टेबल एड्रेसेस, जहाँ पे हाँ। पोर्ट के जगह पे आपका ड्रॉप मिल रहा था, पोर्ट शो नहीं कर रहा था, DROP। तो मतलब ये क्यों होता है? मुझे बाद में मैंने फिजिकली ट्रेस करके उसको मतलब कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट करके फिर से रिकॉन्फ़िगर किया था, तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये ड्रॉप क्यों आ रहा है। Yeah, I will come to this, okay, draw part, okay. Even I face the same issue, okay. I will come to point later on, okay. Because I believe like you have we will also see the .1x authentication, okay. We talk about later, okay, that part, the draw part, okay. जी। Any other question, guys? किसी का? Hello. Yes, Naresh. Yeah, actually, I want to ask कि मतलब ये जो इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो ये थोड़ा दिक्कत देते हैं। मतलब थोड़ा अलग से कभी-कभी थ्योरेटिकल पूछते हैं, कभी सिनेरियो बेस्ड पूछ लेते हैं। Right. So you तो see, like उसका थोड़ा टॉपिक वाइज इसमें प्रैक्टिस करें। every interview, if you see my interview on my channel, okay, if you see the pattern, okay, they always start the interview with the theoretical question or maybe the basic question, okay. If you see, like, if you see the playlist, okay, I have few interview which are uploaded. These are all are real interview, okay. And if you see the pattern, okay, they always start the interview with the basic questions. Then they will ask the more advanced question and the troubleshooting. Okay. So make sure, guys, like पहले आप जो theoretical है या theory है, like maybe they will ask the question like, hey, what is the BGP TCP port number? Okay. BGP work on which layer? So I'm assuming, guys, आपको ये पहले basic theoretical part क्या आपको cover करना पड़ेगा, which, guys, like I will give you my PPT. along, guys, आपको क्या है कोई बुक या आपको इंटरनेट के ऊपर क्या जो ये बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपी प्रोटोकॉल, सॉरी राउटिंग प्रोटोकॉल और राउटर प्रोटोकॉल। तो ये सारे आपको जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपको क्या ऑब्वियसली क्या स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। Then once you go, let's say they ask you 5 basic question and you will give the answer, let's say at least 3, then they will ask you your scenario based question, and that will definitely basically having the main factor, okay, जो कि decide करते हैं you are selected or not. Some, I believe, like they will also give you the lab. So maybe they are give the lab in the interview and you need to fix that issue, okay, जो भी आपको lab में provide किया जाएगा, and if you fix that issue then you will select it. तो इसके लिए कोई सोर्स है मतलब जहाँ से मतलब हम प्रैक्टिस कर सकें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस? सिनेरियो बेस्ड सोर्स तो वो तो मैं कवर करूंगा ना अभी इस बैच के अंदर सारा। अच्छा, आप मतलब दे देंगे क्वेश्चंस, मतलब इस तरह से आ सकते हैं क्वेश्चंस? हाँ, ऑब्वियसली अगर आप देखोगे ना मोस्टली सारे जो मैंने क्वेश्चन भी किए हैं वो एसपीएफ इंटरव्यू क्वेश्चन, बीजीपी इंटरव्यू क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है ना, थ्योरी तो इन टॉपिक्स की मैंने बहुत पढ़ चुका हूँ, तो अब मतलब थोड़ा एक कहते हैं ना मतलब शार्पनेस लानी है इनके अंदर, जैसे इंटरव्यू क्रैक हो सके, वो दिक्कत आ रही है वहाँ पे। शार्पनेस, सभी तो दोस्त ये कोर्स डिजाइन किया हमने। हाँ 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 जी, अदर क्वेश्चन किसी का? Okay, then guys, like we will see the this part, okay, the access and 3-layer architecture, okay. Then tomorrow, guys, like we will start the more about this Cisco 9000 series switches, okay. So the first thing, like if you see, they will ask the question why we follow this 3-layer architecture. So some company, as I told you, you will see the layer, core layer, then you have a distribution layer, then you have a access layer,
और इस एक्सेस लेयर पे गाइस क्या होते हैं आपके एंड डिवाइसेस होते हैं. So you have an end machine, you have end phone, you have video devices, you have printer, you have a Cisco phone. And if you see guys, like if you're following this approach, the main thing is like you see like this is your core, it has 48 port. Okay? And once you connect this one port to the another switch, and this switch has also 48 port, that means क्या आपने इस पोर्ट को क्या फर्दर आपने एक्सटेंड कर दिया 48 पोर्ट पे. एंड देन अगेन इस डिस्ट्रीब्यूशन के पास क्या है आपने एक और एक्सेस स्विच लगा दिया. एंड दिस स्विच आल्सो हैज लेट्स से 24 और मे बी 48 पोर्ट. देन फर्दर आपने क्या है इस पोर्ट को क्या एक्सटेंड कर दिया. एट द एंड गाइस यू विल सी यू विल गेट अ नंबर ऑफ पोर्ट. तो नंबर ऑफ पोर्ट गई दैट मींस कि आप इतने अपने क्या एंड पॉइंट क्या कनेक्ट कर सकते हो. एंड इफ यू हैव गई लेट्स से स्मॉल कंपनी और मे बी यू हैव अ स्मॉल नंबर ऑफ पोर्ट रिक्वायरमेंट, देन यू विल ओनली फॉलोइंग दिस कोर एंड एक्सेस लेयर. क्योंकि लाइक द मेन पॉइंट है गई अगर आप इन इस अप्रोच को फॉलो करते हो यू विल गेट द मोर नंबर ऑफ पोर्ट एंड यू विल कनेक्ट मोर नंबर ऑफ योर डिवाइसेस. ओके, depend करता है in future maybe let's say like my network will be grow. Okay, we maybe let's say next 500 users they are also joining our company. And if you let's say this scenario, so you will see like only the core and access. So here you will only get the few number of port as compared to the 3 layer. Okay, but again it depends how big is your network. Okay, how many end port you require. These days guys, like to be honest, okay, aajkal jo laptop aa rahe hain, the laptop they are not coming with RJ45 port. Okay, so these days guys, like companies they mainly use Wi-Fi as a primary. So even guys, like we have a new Wi-Fi connections. Okay, jo ki they are providing the higher speed as compared to the Ethernet. Okay, we have Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 we have, I believe. And so they are like they have also speed like 1 GB or more than 1 GB. Okay, so even the laptop also not coming on RJ45, but still guys, like they have some tool like jo har ek desk pe I forget the name of that tool. Okay, and this tool basically providing the RJ45 also. I believe guys someone know किसी कंपनी में यूज हो रखा है. और they have let's say USB port, they have HDMI port, और they are sitting on a desk. and अगर उनको RJ45 पोर्ट की जरूरत पड़ती है तो वो इसके थ्रू क्या वो क्या कनेक्ट कर सकते हैं RJ45 कनेक्शन. तो बेसिकली दिस डिवाइस हैज USB कनेक्शन, और इस USB पे गई क्या है वो RJ45 जो पोर्ट है वो इस डिवाइस पे कनेक्ट कर देते हैं. देन दिस डिवाइस फर्दर कनेक्टेड टू योर लैपटॉप वाया USB कनेक्शन. This is very heavy device. Okay, maybe next time I will tell you the name of this device. But this is basically how the endpoint connector. Some of the devices like your printer or maybe they don't have a Wi-Fi card or server, they use the Ethernet. But still, my main point, जो आपकी end machine है, these days they use Wi-Fi as a primary. और in case guys, let's say आपका जो Wi-Fi down हो गया, then they have a second option to connect your network via RJ45 connection. Because you see, like people are like these days they don't basically want to use the wire. They want like they take the laptop, they are surrounding company, they are like going one floor to second floor. Okay, so they use Wi-Fi, okay, as a primary for a connection. So tomorrow, guys, we will see that Cisco 9K1000 difference. Okay, we will see the upgrade also. We'll see some interview question, and then we will start the other topic, like which are switching technology. Okay, they are not depend on the model. Like we see the STP, we will see the layer 2 troubleshooting.
So those are the same thing, okay? Those are the same thing. They are not related with the model, okay? Yes, so those guys who are interested, please let me know and ping me, okay, one-to-one. Once you pay the fees, okay, then tomorrow you will join, okay? And if you want me to, if you want to know more about me, you can watch my channel, guys. So everything, as I told you, will see the real perspective, okay? If you have any question, guys, you can ask me. Any question? इसमें नेक्सस भी कवर होगा ना, मतलब थोड़ा बहुत? Nexus cover hoga, yes, English. Okay, Even guys thank like you. those who are in hurry, okay, means like say, because as I told you, I'm taking the class in weekend. I will provide you my video, okay? Once you pay the fees, I will provide you my Nexus, Wi-Fi, routing, switching, and firewall video. Maybe tomorrow. Okay. So again, guys, if you're paying the fees one way, that the fees is 20,000. If you're paying the fees in two way, in two partition, then the fees is 25K. Okay. Okay, guys, then see you tomorrow, same time. Please let me know if you are interested to join this course. Okay, ping me one-to-one. Okay. Any question that you can ask me late, maybe after the class. Okay, you can ping me on my WhatsApp number, or you can call me. Okay, guys, see you tomorrow then. We will see you tomorrow. We will start this Cisco 9000 series switches. Okay. Okay. Okay, Bye. sir. Bye. Okay, bye. Bye. Hello. हेलो हाँ अर्जुन, हाँ जी अच्छा सर बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। सर एक्चुअल में ना मैंने इंटरव्यू तो काफी दिए हैं, 2-4 इंटरव्यू दिए हैं तो मोस्टली फायरवॉल पे ही दिए हैं।